Namaskar. I would like to welcome you on AYUSH SAMRIDDHI's 977th milestone, in which we will be going on unique topic, contraception, the AYUSH way. Very senior experts are with us and they will guide us about the Ayurvedic way. Modern contraception has limitations also, side effects also, complications also. So it is not wise to use modern contraceptive for a long time. But if we have something in our Ayurveda, some medicines in Ayurveda, definitely we should present Ayurvedic option or Ayurvedic solution for contraception to the world. ये ध्यान की बात है कि हम कितना आगे जाते हैं, कहां तक जाते हैं, लेकिन हम कहीं तक भी जाए एक निष्कर्ष बिल्कुल सही है। इस ज्ञान गंगा में आप लोगों के आशीर्वाद ने हमको एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हम निरंतर अपनी ज्ञान गंगा की यात्रा आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, मार्गनिर्देशन से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार सभी वक्ताओं का, बहुत बहुत आभार आदरणीय अग्निहोत्री सर, आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी का, सभी का बहुत बहुत आभार। मैं समय नष्ट न करते हुए आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी को सादर आमंत्रित करता हूं और हिज वेलकम ब्लेसिंग्स। Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on contraception, the AYUSH way. Most important subject today we have. In this webinar, I want to welcome expert Buddha Parule Joshi, Director, ex-principal from Gandhinagar. Namaskar, madam, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Professor Niru Nathani, Professor and former Head Department of Shastravidya, IMS BHU Varanasi. Namaskar, madam, and welcome you to this evening webinar. Namaskar, namaskar, sir. Namaskar. Next, I want to welcome Dr. Ushma DT, Leader, Department of PG Studies in PTSR, JSS Ayurveda Medical College, Mysuru. Namaskar, madam, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Shreyas S., Associate Professor, Department of IU, Obstetric and Gynecology, Rajiv Gandhi Education Society, Ayurvedic Medical College, Ron. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on contraception, the AYUSH way. Once again, welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you. Thank you very much, sir. Today, World Contraception Day is there. So we are celebrating World Contraceptive Day. And after that, our next webinar is on environmental health. हम आदमियों की सेहत की बात करते हैं, वेट की सेहत की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि सबकी सेहत ठीक रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें हमारी माँ प्रकृति जो सब हमको देती है, उसकी सेहत के बात करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट ऑफ द लाइन नेक्स्ट वेबिनार में 9 बजे से रहेंगे, 9:15 से। सो प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू। मैं विद काइंड परमिशन ऑफ सीनियर्स एज गाइडेड टू मी, first of all, I would like to invite Dr. Shreyas
Shreyas S. He's, I hope, first time on our platform. Welcome, Dr. Shreyas. Thank you, But sir. before that, I would like to welcome my senior guardian, Professor V.K. Agnihotri, sir, ex-principal Haridwar Ayurvedic Medical College, for his blessings. Thank you. You are Thank you. mute, sir. थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। नमस्कार और सभी को आज के हमारे अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने बताया, कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन मींस कंट्रासेप्शंस बाय द कंट्रासेप्टिव्स, एक ये विचारधारा आती है। लेकिन ये जब से कंट्रासेप्टिव्स बने तब से कंट्रासेप्टिव की बात आई तो अलग है, अन्यथा में अगर हम सोचे तो ये देखना पड़ेगा कि कंट्रासेप्शन एक्शन मींस अवॉइड द प्रेगनेंसी, मींस यूज द टूल व्हिच कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो अपने यहाँ तो बहुत पहले आत्म संयम वाली बात आई थी, और टेक्निकली एक शब्द और हम लोगों ने पढ़ा था आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, कोइटस इंटरप्टस, बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस कंडीशन में भी ये था कि the discharge should not be made inside the vagina. In that way, it will be avoiding the pregnancy. Or else there are so many oral contraceptives, contraceptives, and now the injectables also. Males are the pride box a little bit, but the females are having a lot of good tools to prevent this pregnancy. So here we have got a very new team today, right from the youngsters to senior ones, and they will put a good light. Might be having some historical background also, right from the very beginning to till date, how much things are there and how much they are successful. What is the success rate of using these contraceptives? So all these things we are going to listen to our distinguished guest speakers, because we are all knowing that India is a country of having a largest population. So it's a very, very important that how can be prevented. With these words, I think our knowledgeable guest speakers are going to add on so many knowledge to our platform. Thank you so much. Over to Pawan Sharma for that. Welcome, Dr. Shreyas. Welcome. Please introduce yourself and. Thank you so much. A very good evening to all of you. Respected Professor Bishnu P. Sharma ji, Professor Vinit Kumar Agnihotri ji, and Professor Pawan Kumar Sharma ji, and all my other fellow speakers of today's evening. Myself, I am Dr. Shreyas, Associate Professor, working in Prasuti Stri Roga PG Department of Rajiv Gandhi Ayurvedic Medical College, Roan, Karnataka. So I've been practicing VG since almost 11 years. And this is a very fine topic. When morning I got a call from Pawan sir, I couldn't resist saying no, in spite of short notice, because this subject, contraception, is something which now in the next future, Ayurveda strength will be something in this part, that is contraception. And very aptly, today being the World Contraception Day, it is in fact my pleasure to be speaking something about our strength, which Ayurveda has in regards with contraception. So let me start the PPT with the permission, please. You are co-host, so you can do everything what I can. Yes, can you see the screen? No. Give me a moment, No please. problem. No problem. Please take your own time. Yes. No. Yes. You can go for slideshow. Okay, sir. Right. Excellent. All the best. Thank you, sir. One second, give me a moment. It was playing good. Yeah, sir. Yeah, I'll do it. I am getting this little
The cursor is not moving away. 1 second. I'll stop sharing and I'll do it next again. Now is it okay, sir? Visible yet? Not Not visible. Not visible? Yes, not visible. Okay, 1 second. It's not visible even now? No, Not yet. not. Okay, then I'll have to do it here. Yes. Perfect. Okay, contraception, the Ayush way. And to speak about the contraceptives, which have a proven track record of enhancing the health of women and children, preventing unintended pregnancies, and reducing the need for abortions. And aptly, the theme for 2023 World Contraception Day is the power of options. So here, when a varied platter of options are available, one such option could be the thought of Ayush way. The very thought or the thinking of Ayush way can also be an option, which primarily might not be that famous, but we Ayurvedic practitioners can actually make it quite popular by studying the concepts. Implementation requires certain amount of effort by the clinical studies, etc., which are happening in fact, but at least introduction of the concept of contraceptives, which our Ayurveda has to be known for on today's program. Like said, birth control can be defined as the methods, procedures, or practices that are implemented to prevent conception leading to pregnancy in women. The term can be associated with contraception and family planning. When you see the actual definition of family planning, it is a very big definition, which includes, it is a holistic definition, whereas contraception is something which is very limited, but has a varied role. So the term can be associated with contraception and family planning, where knowledge about birth control is equally important. In current trend, the commonly used synthetic or hormonal drugs are known to interfere with the endocrine system and may have adverse reproductive, neurological, developmental, and metabolic effects in the body. So the most there are very many complications we come across because of the usage of these synthetic or hormonal drugs. For that point, we find the rising incidence of PCOS, endometriosis, the early menarche or the precocious puberty, infertility, germ cell carcinomas, breast carcinoma, brain developmental problems, and birth defects can be directly attributed to the usage of these synthetic or hormonal contraceptions. The search for an effective and safe contraceptive agent remains a challenge, and contraceptive drugs of natural origin are of all-time research interests. Traditional systems of medicine like Ayurveda addresses all issues related to health and illness based on the principle of equilibrium between the biosphere and the cosmosphere, which includes the reproductive phenomenon also. So when we speak about the Ayurvedic contraception, we have to have an idea about Garbha Sambhava Samagri. The Garbha can only happen if these factors coincide in a harmonious way, for which Rutu, Kshetra, Ambu, and Bija with Vata and Manas are equally important. Any one or more of these factors, if influenced artificially, can lead to a failure of conception. So here in Ayurveda,
in our classical texts, Brihatrayis and the later Nighantus, we have few references in relation with contraceptions. I am only quoting a very few, which can be actually practically implemented also. So few of them are like local sthanika chikitsas, and few are aushadha, that is through ahara or through your oral routes. So few of them which have the sthanika action, like in the form of dhupa, lepa, etc., is here like yoni dhupana before the coitus. So here there is a reference of using moistened Saindava Lavana and Tila Taila. This can be applied as a lepa there. And also yoni dhupana or lepa of Nimba Twak. So here Nimba Twak before coitus. Sometimes even the Nimba Thaila is also used, but you will have to see whether it irritates the mucus or not. If not, then absolutely it could be used. And also the powdered root of Datura, which is specifically mentioned, should be plucked on the 14th day of Krishna Paksha, and tying the Datura root around the waist can also work. This is attributed to the prabhava of the dravya. So this is one of the example or the reference of Sthanika Chikitsa in Garbha Nirodha. Now, a few oral contraceptives which are mentioned in our classics, like the Pippali Churana and Vidanga Churana with Tankana. When you take an equal quantity during the after the menses, during the fertile phase with Dugdha, helps as anti-fertility. So flowers of Japa, which you take immediately after the delivery of a child, or with Kanji, along with 48 grams of Purana Guda, which has to be taken for 3 days after the menstrual phase, after the bleeding phase. For example, day 6, day 7, day 8, the consumption of Japa with Kanji and 48 grams of Guda, Purana Guda. And also there is another reference of the Tanduliyaka with Tandulodaka. So the root of that Shaka, Tanduliyaka, along with some Tandulodaka, to be taken after menstruation for 3 days. Then you have Thalisapatra, Apis spectabilis, and Gairika. Thalisapatra and Gairika mixed in equal parts, which has to be consumed on the 4th day of menstruation with water. The aqueous extract of Daruharidra with the Shvetavacha and the Vayasta or Haritaki with cold water. Then also the Amalaki Churana, Arjuna Churana, and the Abhaya Churana with water also works as contraceptive. The paste made up of Chitrakamula, which is mixed with Nirgundi, and this is given orally in the dose of 12 grams with honey. The powder of Sarshapa with Tanduliya, the Shaka Tanduliya, and Sharkara, pounded with Tandulodaka and given with milk. This is also another reference which we can find in our classics. Then pharmacologically, when we see, there are about 67 documented medicinal plants which possesses the anti-fertility activity in female, and 56 medicinal plants in males. So several plants have shown to help contraception from the female and male perspectives. So in various experimental animal models, these herbal extracts have shown minimal side effects in comparison to the chemically synthesized contraceptives, which usually contain various combinations of hormones. And these plant extracts have active phytoconstituents which are responsible for the anti-fertility effects such as anti-ovulation, anti-implantation, and others. So when we go on to the clinical studies, there are various clinical studies which have been documented. Few of them, like the Embolica ribes, the Vidanga, the single drug which is administered in a dose of 2 grams for 5 days, followed by 1 gram daily for another 10 days, after observing the effect on 2051 cycles in 45 women
over 4 years, it was reported that the plant protected 95% of women from pregnancy. This was done by our Guru Premavati Tiwari and all. Late in 1976, this clinical study is documented. And then again, we have another study in 1974 where the hibiscus rosacensis, that is the japa, again, the red petals of the plant Rudra Pushpaka or japa, which is collected between October and December. And the extract was administered to 30 sexually active women at a dose of 750 mg per day from day 7 to day 22 of the reproductive cycle. And it was observed that no one had become pregnant. The Nimbathaila, again, a study was conducted on neem seed oil as local application for the reproductive female, where 246 women in the fertile age group, 4 dropouts, as a method of family planning for a period of 12 to 36 cycles. In 9 cases, there was conception due to drug failure, and in 4 cases, there was conception due to drug omission. The Nimbathaila may be used as an external barrier as a cost-effective herbal contraceptive for its spermicidal property and is considered safe for regular use. And again, you also have Ricinus communis, the Aranda. The seeds of Ricinus communis, administered as a single oral dose of around 2.5 grams once every 12 months, acted as protection against pregnancy in 50 women volunteers. The study revealed very minimal side effects. The anti-fertility on contraceptive efficacy is due to the hormonal mechanisms, and you have various studies of this which taken orally can prevent ovulation in humans, and the anti-conceptive effects may be due to the part of prevention of ovulation. So here it acts as anti-ovulatory. So when you see the mechanism of action, medicinal plants may induce infertility in distinct ways. They may affect the ovarian, uterine, and hormone production functions and interfere with implantation or sperm production. So these drugs are of natural origin, hydrophilic, lipophilic, and can traverse paracellularly through the vaginal mucosa and exhibit its efficacy as contraceptive by altering the vaginal pH. These drugs may variably act locally to bring changes in the cervical mucus and alter the decidual embedding and thereby act as anti-implantation agents, or may inhibit the propulsion of sperm in these fallopian tubes by altering the tubal mechanisms, or may act on hormones as anti-ovulation agents. They may act through rapid expulsion of the fertilized ova from the fallopian tube or inhibit implantation due to disturbance of the estrogen-progesterone balance, or induce fetal abortion by inhibition of nutrition to the uterus and the embryo. So moreover, plants with estrogenic property can directly influence the pituitary action by peripheral modulation of LH and FSH, decreasing their secretions and blocking the ovulation. So plants with anti-estrogenic activities intercept in the process of development of ovum and endometrium, and on the other hand, plants have abortifacient effects. So in my given time, to conclude this, I have spoken about few references where we have the local or oral contraception references and how they influence on the Garbha Sambhava Samagri by affecting the Rutu, Kshetra, Ambu, and also the Bija. So here in conclusion, contraception is a choice, and a woman has the right to make correct choices for herself without caring about the other people's thoughts. On this remarkable day, we should keep in mind that our fight is against the old school ideology of people talking against the usage of contraceptives for younger women. Pregnancy is undoubtedly a gift for any woman, but only during the perfect time. Otherwise, you can opt for contraception, and this is absolutely normal. So stay healthy, stay safe, stay strong, and avoid unnecessary stress of unwanted pregnancy by simply opting for contraception, and thus wishing everybody a happy World Contraception Day. Thank you.
Thank you very much, Dr. Shreyas. You have really opening century. Thank you, sir. Opening century. Excellent. Very nice content and excellent explanation. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Please do join this platform whenever the topic of your subject or of your interest will be there. Okay? Thank you, sir. Please propose your name voluntarily. Oh, yes, sir. My pleasure. Thank you very much. Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Thank you, Dr. Shreyas ji. As you talked about that, you have got 11 years experience for coaching this MD thesis work. So in that way, you quoted very well along with your experimentation. Yeah, and as a result, you also talked about the Nimpat, Dhupan and the Stulpat preparation, avoiding the contraception, pregnancy, or you can use it in any preparation, but you use data also using preparation, especially the Japakusum or the Ambika Revis. Everything are there as a spermicidal or Kaminashak in that way might be. So thank you so much, and please do join again and again. Thank you. Thank you. Now I would like to request Professor Neeru Nathani ji. Professor Neeru Nathani ji from BHU. Welcome. Are you comfortable, madam? Yes, Yes, welcome. sir. Welcome. हरिओम स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नींद से उठा के बिठा दिया आपने। जय हो। आयुर्वेद की जय हो, आपकी भी जय हो। 8 बजे कोई सोने का टाइम है। हाँ सर, सो के पहली शिफ्ट में उठेंगे तभी तो फिर। नहीं, अच्छा ही है। आयुर्वेद का सिद्धांत पालन कर रही है। हाँ जी, स्वागत है सबको, सभी गुरुजनों को, सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। All dignitaries in this platform, especially Professor Sharma sir, Professor Pawan, Professor कौन से हैं वो, कलकत्ता वाले, गुवाहाटी वाले, and Professor no doubt, हाँ नहीं सर, गुवाहाटी वाले सर कौन से हैं? विष्णु प्रसाद शर्मा, नाम भूल गया, वो भी शर्मा जी हैं। अच्छा ठीक है। और and no doubt our esteemed learned team leader of this seminar, Professor V.K. Agnihotri sir, and all dignitaries joined over here. आज का टॉपिक जो है वो मेरे सब्जेक्ट का तो नहीं है, लेकिन सर ने बोला कि आपको बोलना है तो मैंने बोल दिया। और सर ने मुझे क्या बोलना है उसका तो एक लाइन में उपसंहार तो पहले ही अग्निहोत्री सर बोल चुके हैं। हमारे अपने सिलेबस में है भाई, ऐसा कैसे? अपने टॉपिक अपना है। सिलेबस में तो है सर, लेकिन हमें आयुष के लिए बोलना है ना सर। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। तो आयुष नहीं सर, पता है क्या, मेरे को लगा कि सर बोले वो, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला, तो मैंने अपनी रिसर्चेस की थी तो मैं कमांड के साथ बोल पा रही थी। अरे भाई रिसर्चेस नहीं है, मैं अभी मैं उस पे आ रही हूँ सर। कंट्रासेप्शन और प्रिवेंशन आपका सब्जेक्ट है ना, तो मैं उस पे ही आ रही हूँ सर, उसी को ही मैं बताने जा रही हूँ। और मैंने फिर चूज किया कि नहीं, मुझे क्या बताना है, जो मैंने पूरा देखा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बाकी फिर जब मैंने जब आपका फ्लायर देखा तो उससे और मुझे हेल्प मिल गई। उसमें आपने लिखा है टॉपिक क्या है सर आज का? आज का जो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन द आयुष वे। हाँ, द आयुष वे। तो उससे मुझे और हेल्प मिल गई कि अगर आप बोलते कि आयुर्वेदिक वे, तो उससे मैं थोड़ा लिमिट हो जाती। आपने आयुष वे कर दिया तो उसके आयुष के वाई को उठाऊंगी मैं यहाँ पे। आयुष के ए को तो उठा लिया आपके डॉक्टर श्रेयस जी ने। उन्होंने बहुत ही अच्छे से, जितने भी हमारे न्यू कमर्स इसमें जुड़े हुए होंगे, जो यंगस्टर्स स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने थ्योरेटिकल टॉपिक, उसकी डेफिनेशन के साथ, थ्योरेटिकल रेफरेंसेस के साथ और उसके क्लिनिकल रिसर्चेस के साथ बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक कंसाइज वे में बहुत ही सुंदर प्रेजेंट किया। उनको मैं थैंक्स बोलूंगी। और सर आज के टॉपिक में मैं जो आज रखना चाहती हूँ मैं,
उसमें कि हमारे आयुर्वेद में तो जो कुछ है सारा कुछ आयुर्वेद में या ह्यूमन बीइंग में ही क्या है, शरीर और मन, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चार का सहयोगी जीवन है। यहाँ से ही मैं उठाऊंगी तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, तो हम लोग आत्मा के साथ ही जीवित हैं और शरीर को कंट्रोल करने के लिए ये सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हुई, तो वो सारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, और मन को कंट्रोल करने के लिए किसी मॉडर्न वाले, किसी साइंस ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बताया। तो उसके लिए जो है, हेलो मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर आ रही है मैडम, क्लियर। हेलो जी सर। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। जी सर। तो शरीर और मन की बात हो रही है, और शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, तो इंद्रियों पे कंट्रोल और मन पे कंट्रोल, इस सब की बात है। अगर हम उसको लेके चलें, जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जितने भी मेडिसिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये सारे हमारे सिर्फ शरीर के हॉर्मोन्स को, फिजियोलॉजी को, उसी को कंट्रोल करता है। तो बाकी बचा मन और इंद्रियां। आपने सभी को पता है कि इसके फेल्योर रेट भी है, चाहे वो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो चाहे आयुर्वेदिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो। तो अगर हम अपने मन के ऊपर ध्यान, कंट्रोल की बात करें और इंद्रियों के कंट्रोल की बात करें, तो शरीर के कंट्रोल के साथ साथ उनको भी कंट्रोल करें, तब जाके उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। पूरा इफेक्ट तभी आ सकता है। और अभी जैसे बात हुई कि ये सभी को पता है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज की बात है, ये सारे मिलके ही काम करते हैं। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, और इसी तरह से शुक्र, शोणित, जीव संयोगे यो भवे दोष उत्कटा। तो शुक्र और शोणित जो है वो किस तरह का हो, उसकी क्या क्वालिटीज हो और उस समय हमारे दोष की क्या स्थिति हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है गर्भ की स्थिति होती है। तो वहां पे भी हम, हमारे चित्त की या मन की, सत्व की बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से हमें अपने सत्व को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी बात आती है। तो उसी पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी। सर ने मेरे को बोला था कि 10 मिनट बोलना है, तो मुझे लगा कि 10 मिनट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और चाहे कितनी भी मेडिसिन हो, जो सॉरी मेडिसिन ना कह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, जो तभी काम कर सकते हैं जब हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ हो और इंद्रियां स्वस्थ हो, तभी उसका इफेक्ट होगा। अदरवाइज फेल्योर भी उसका होता है। तो हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात है कि किस तरह का होना चाहिए, उसमें उन्होंने पाक की बुक में जो दिया हुआ है कि दैट शुड बी सेफ, इफेक्टिव, एक्सेप्टेबल टू ऑल, इनएक्सपेंसिव, रिवर्सिबल, सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड लिटिल और नो मेडिकल सुपरविजन। अगर हम मन के कंट्रोल की बात करते हैं यहाँ पे, अभी हम उसको योग के टर्म में बोलेंगे कि अगर हम अष्टांग योग के टर्म में लेके जाएंगे आगे बढ़ते हुए, तो जो सेफ, इफेक्टिव, एक्सेप्टेबल, इनएक्सपेंसिव, ये सारे जो क्लॉज हैं, वो हम अगर मन को कंट्रोल करना है तो वो उसमें सारे इसमें क्लॉज हमें अवेलेबल मिलते हैं। एक्सेप्टेबल, जैसे कि वहां पे बताया कि यम जो है वो महाव्रत है, किसी भी देश, जाति, काल की में वो किया जा सकता है, देश संख्या भी परिदिष्ट हो। तो इस तरह से जो अब हम आते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा हम किस तरह से मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सत्व को बढ़ाते हुए, क्योंकि ये जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज की क्या जरूरत पड़ी, जब हमारा, जैसे सर ने एक लाइन में शुरू में कह दिया कि ये तो पुराने से ही चला आ रहा है कि त्रयम एकत्र संयमा, और संयम की बात चलती है। तो लेकिन ये इसकी बात कब चली, जब हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल ना हो और मन पे कंट्रोल ना हो। तो इसलिए हमें अष्टांग योग की बात आई, वहां पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम की बात आई। आसन प्राणायाम को अगर हम अलग रख दें अभी और यम नियम पे आए सीधे, या उससे भी पहले हम योग से पहले अपने सद्वृत में पूरे जितने भी हमारे कंट्रोल्स, इंद्रियों पे कंट्रोल की बातें लिखी हुई हैं, तो सद्वृत में बहुत सारा मैटर इसमें भरा हुआ है कि किस तरह से हमें अपने परिवार में किस तरह से बिहेव करना है, अपनी महिलाओं से किस तरह से बिहेव करना है, अपने से छोटी महिलाएं हैं तो बहनों की तरह, बड़ी हैं तो माता की तरह, इस तरह से जो हमारे संस्कारों में ही लिखा हुआ है। तो अगर हम, आजकल जो समाज में कुरीतियां हैं वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें इस तरह की शिक्षा ही नहीं दी जाती और पूरा करप्शन इसी तरह ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस सबको हम कुछ चलाएं। और आप देखिए, एक इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगी, जो ब्रह्मा कुमारी का एक मिशन है जो सभी को मालूम है,
तो वहां पे भी देखिए वो लोग कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो सब चीजों को लर्न करते हैं और ईश्वर आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की ओर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो वो सारा कुछ ऐसा नहीं है कि ये सब पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि ये सब कहने की बातें हैं कि नहीं हम मन कंट्रोल नहीं कर सकते और इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारा हमारे सेल्फ कंट्रोल में है। सभी को पता है मन चंचल है, अणु है, तत्व है और मन को कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल है। तो उसके लिए हमें पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा और नो डाउट मन भी उभय इंद्रिय ही है, लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को हमें कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए हम योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते ही हैं, लेकिन उसके पहले यम में हमारे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब इतने रोज न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो गया और सब हुआ, तो वो सारा क्या है, एक बहुत बड़ी हिंसा ही है। तो उस हिंसा को रोकना, किस तरह से माइंड हमारे स्कूलिंग बच्चों की अपब्रिंगिंग, छोटे बच्चों के स्कूल में कैसे अपब्रिंगिंग अच्छी हो, वो कैसे एजुकेशन दी जाए, कैसे, तो वो सारी चीजें हमारा बहुत बड़ा उसमें रोल आता है। और हिंसा के को रोकना, साथ ही साथ जो है आपका ब्रह्मचर्य में मेनली जो है सेक्सुअल कंट्रोल तो है ही है, साथ ही साथ सारी इंद्रियों पे कंट्रोल। तो उसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी पे कंट्रोल होना, दैट इज ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के पालन से है क्या और लाभ क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो वीर्य लाभ मीन्स नॉट ओनली द सेविंग और good quality of semen also only or ovum only, but the वीर्य means शक्ति। अगर शक्ति से ले हम कि हमारी शारीरिक शक्ति और साथ ही साथ मानसिक शक्ति जो है वो ब्रह्मचर्य से या इंद्रियों के कंट्रोल से उत्तम होती है। इस तरह से हमें अपने मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करना। तो जितना भी हम ये कैसे हो सकता है, हमने कह दिया कि नहीं भाई अपने मन पे कंट्रोल करो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, तो वो कैसे हो सकता है? हमें बार बार उस चीज को किसी भी चीज को जैसे हमें याद करना है तो उसे हमें लर्न करना पड़ता है, बार बार उसको रिपीटेशन करना होता है। उस बात को बार बार सुनेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो हो पाएगा। और उसके लिए हमें साथ ही साथ प्रत्याहार के बाद हमें धारणा ध्यान की बात भी करनी पड़ेगी। धारणा ध्यान समाधि की तो बहुत लेट स्टेज है, हम लोग इतने सत्व प्रधान नहीं है कि हम तुरंत समाधि की अवस्था में जाए। तो हमें रज और तम को मुक्त करना होगा। ये जितनी भी जो कुरीतियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? रज और तम की वजह से ही बढ़ रही हैं। तो हमें अपने रज और तम को कम करने के लिए नो डाउट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेशन के पहले अब हम कहें कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन में योग ये आपके आसन और प्राणायाम कैसे काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको मेडिटेशन करने के लिए आसन और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसन से शरीर स्थिर होगा, प्राणायाम से मन और श्वास प्रश्वास स्थिर होगा, तभी आप मेडिटेशन कर पाएंगे। इसलिए आप कहें कि सीधे मेडिटेशन में बिठा दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेडिटेशन करना, जब मेडिटेशन करने से हमारे सत्व की वृद्धि होगी तो हमारे जो मन है वो सद्गुणों से युक्त होगा, तब हम ये इन सब कुरीतियों की ओर नहीं जाएंगे और अपने को सेल्फ कंट्रोल करेंगे। ये जो जितना भी ऋतु क्षेत्र, अंबु और बीज की बात आई, ये सारा हमें केवल ह्यूमन जनरेशन में इसलिए दिया गया, ह्यूमन लाइफ में, कि आगे संतति को चलाने के लिए, नॉट फॉर यूज ओनली। तो इस तरह से अगर हम उसको यूज ओनली करते हैं तो हमारे में, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस तरह से ह्यूमन बीइंग में ही केवल ये कैपेसिटी है कि वो अपने सेल्फ कंट्रोल कर सके, अपने योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा सके। तो इस तरह से हमें अपने सेल्फ कंट्रोल के द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल करने के साथ साथ एक रोल मॉडल बनते हुए समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश दे सकते हैं। और ये सब चीजें हम बचपन से ही बच्चों को शिक्षा दें तो हमारा संस्कार बच्चों में उसी तरह के जाएंगे, तो एक अच्छा समाज हमारे सामने भविष्य में जरूर खड़ा होगा। जैसे कि डॉक्टर शेष जी ने बनाया द पावर ऑफ ऑप्शंस, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि बचपन से स्कूल में हम इस तरह के आयुर्वेद की, योग की शिक्षा दें। तो दिस इज द मेजर ऑप्शन, नॉट ओनली फॉर गुड कॉन्ट्रासेप्शन और गुड control over this contraception, only also for good generation and also for holistic approach of health in the universe.
तो सर मेरे को यही कहना था इतना ही आज। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत Thank अच्छा you बोले। very much. ये तो बिल्कुल ही अलग और पेरिफेरियल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बिना नहीं होगा। तो आप सर कह रहे हो जो सब, हाँ जी हाँ जी, हाँ सर। बहुत अच्छा मैडम। थैंक नाउ यू आई वुड थैंक लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर पारुल जोशी जी। मैडम पारुल जोशी जी, स्वागत है। नमस्कार सर जी। इतना नमस्कार। बढ़िया बोले हैं आगे के वक्ता, तो मेरा तो जो है वो बोलने का मन ही नहीं हुआ, बस उनको सुनते ही रहने की इच्छा हो गई। दोनों वक्ता अभिनंदन, यानी ढेर सारे अभिनंदन है उनको, बहुत बढ़िया बोले। और ये जो है प्रथम वक्ता जो है फर्स्ट टाइम बोले, फिर भी काफी ग्रिप के साथ बोले हैं। तो आयुर्वेदिक, क्योंकि मैं तो आयुर्वेद की ही बात करूंगी, तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट फॉर कंट्रासेप्शन जो है उसके ऊपर मुझे बोलना है साहब। तो मैं आगे शुरू करती हूँ। Contraception is intentional prevention of conception through use of various devices, sexual practices, chemicals, drugs और surgical procedures। ये इसमें कोई भी यूज करके बच्चा न हो इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसी ये व्याख्या हमने इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से मिली है। Any device or act whose purpose is to prevent women from conceiving can be considered as contraceptive। उसमें बैरियर, केमिकल, परमानेंट और नेचुरल, ऐसे 4 तरीके बताए गए हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जिनको प्लान करनी है अपनी प्रेगनेंसी, वो भी कॉन्ट्रासेप्शन का सहारा ले सकते हैं, और जिनको फैमिली नहीं बनाना है वे कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो है वो उसका उपयोग होता है। कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसके लिए एक बात तय है कि इट हैज टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली। उसमें अगर ध्यान न रखा तो जो व्यक्ति है या कपल है वो इनफर्टिलिटी में आराम से चले जाएंगे और वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप अगर हार्मोन्स ले रहे हैं या फिर ऐसी क्रीम्स ले रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं जो आपको राज नहीं आ रही है, तो समझ के उसमें से बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक सर्वे किया गया है और सर्वे का ये निष्कर्ष है, इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन हार्मोनल बर्थ कंट्रोल। तो नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो 100% इफेक्टिव है, और एक्सटर्नल कॉन्डम जो है वो 87% है, लेकिन बाकी जो है उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आखिर में ब्रह्मचर्य जो है वही श्रेष्ठ है और उसी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मैडम जी ने वही बताया। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जो है 1994 से आज दिन तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस यानी वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है उसके ऊपर उन्होंने ये हमें दिया है कि पहले से 94 से और आज तो वर्ल्ड ओवर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज बढ़ा है। नॉर्थ अमेरिका में कम हुआ है, ओशियाना में कम हुआ है, बाकी हर जगह पे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जो है वो बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में बढ़ा है। वीमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस एंड ऑप्शंस जो है वो पहले से यानी 2002 में जो थे, और ये जो सर्वे किया गया 15-17 में, तो उस टाइम क्योंकि उसके बाद तो कोविड आ गया तो शायद अब का जो है वो अब आएगा क्या बोलते हैं सर्वे स्टडी रिजल्ट जो है अब आएंगे। तो ये जो दोनों के बीच में जो फासला है उसमें हम देख सकते हैं कि पहले से इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मात्रा बढ़ा है, विड्रॉल का मात्रा बढ़ा है, इम्प्लांट और कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग या पैच की मात्रा बढ़ी है, बाकी सबकी मात्रा जो है कम हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मिथ्स और ट्रुथ जो है वो तो ठीक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात जो है वो हम जानते हैं कि स्पर्मिसिडल जेली या स्पर्मिसिडल टैबलेट का हम लोगों ने यूज किया और उसके साथ जो है वो हम लगाते हैं, उसकी वजह से वेजाइनल फ्लोरा तो डिस्टर्ब होती ही है, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब होते हैं और आगे चल के उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
आयुसीडी में कॉपर्टी हो या मल्टी लोड हो, उसकी वजह से यूट्रस जो है वो इरिटेट होता है। तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो है वो भी इरिटेट होता है, उसकी वजह से स्थानिक शोथ आता है और आगे चल के वहां पे ग्रंथि बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो शायद यूट्राइन कैंसर्स या यूट्राइन ट्यूमर्स के जो केसेस बढ़े हैं उसमें आयुसीडी का एक रोल हो सकता है। दूसरी बात जो है, हमारे आयुर्वेद के अंदर जो है अपद्रव्य प्रयोग की वजह से योनि व्यापद होने को बताया है। तो अपद्रव्य में हम लोगों ने देखा था कि कंडम जो है, हम लोग हमारे अखंड आनंद में कंडम जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थी, तो अखंड आनंद में, बड़ौदा में, कोलवड़ा में, भावनगर में और जूनागढ़ में 5 जगह पे हम लोग को जो है वो कंडम भी देते थे और पिल्स भी देते थे। तो पेशेंट जो है वो ज्यादा करके कंडम का चॉइस रखते थे। तो हम लोगों ने देखा कि कंडम के यूज की वजह से एक्चुअली जो है वो एसटीडी और एड्स रोकथाम में भी उसका उपयोग होता है। लेकिन जो कंडम है हमारे इंडियन जो है उसका नाम निरोध है गवर्नमेंट सप्लाई का, तो वो निरोध जो है वो फट जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो कैसे यूज करना, तो पहले हमारे यहाँ पे ही बना था कि वो आशा वर्कर ने सिखाया था। वो अपने अंगूठे के ऊपर निरोध पहन के बताती थी कि इस तरह पहना के फिर उसको इस्तेमाल करना। तो हस्बैंड जो है वो निरोध को अंगूठे पे लगा के मैथुन करता था, तो कंसेप्शन हो गया। तो कपल आया और बोले कि मैडम देखो ये कैसे हो गया। तो पूछा कि भाई कैसे यूज कर रहे हो, तो आशा वर्कर ने बताया था थंब के ऊपर निरोध लगाने का और मैथुन करने का, तो हम लोग उसी को बराबर पालन करते थे। अब थंब पे निरोध लगा के मैथुन करने से कैसे कॉन्ट्रासेप्शन होगा, तो ये भी जो है समझाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और निरोध जो है ठीक से नहीं लगाया गया होगा, फीमेल है या मेल है, तो फटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और एक बात जो है वो, जब ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसका हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं और मास जो है वो इसकी ओर बढ़ा है, उसकी वजह से एक बात ये देखने को मिली है कि गृहस्थ आश्रम की जो गंभीरता है वो तो रही नहीं है। वो शादी से पहले ही सब कुछ निपटा लेते हैं, तो फिर पूछना ही होता है कि भाई अब आपको करना क्या है, शादी के बाद आपको क्या करना है। तो अनमैरिड underage children because of these contraceptives are getting sexually active, और उसकी जो है वो हमारे एजुकेशन पे उस पर इफेक्ट आती ही है, क्योंकि सेक्स की ओर अगर बच्चा चला गया तो उसके अंदर जो है वो उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा। इट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह यूज एंड थ्रो, तो रिलेशंस में भी यूज एंड थ्रो आ गया है। तो दूसरी बात जो है वो परिवार भावना नहीं रही है और फेथफुल रहने का कंसेप्ट ही जो है उसका समूल उच्छेद हो रहा है। किसको पता चलेगा, तो किसी को पता चले न चले, मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जो है वो पूरी जिम्मेवारी निकल गई है। और एक बात तो तय है कि जब ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल होते हैं तो एबॉर्शन एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। हम देखिए यहाँ पे भी जो है मेल का यूज जो है वो कम कर रहे हैं। क्या मेल के पास नहीं है उनके पास भी है, वे भी इंजेक्टेबल्स ले सकते हैं, रिदम मेथड यूज कर सकते हैं। विड्रॉल मेथड से उनको संतोष नहीं मिलता है। मेल स्टरिलाइजेशन के अंदर भी देखा गया है कि मेल्स डोंट ट्राई, दे ऑप्ट आउट। उनको स्टरिलाइजेशन नहीं करवाना है, क्यों, फिर मैं नपुंसक हो जाऊंगा तो फिर मेरा क्या महत्व रहेगा, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, तू करवा ले। अभी उसका जो है एब्डोमिनल है, आपका है एक्सटर्नल है, तो करवा दीजिए भैया। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं क्यों करवाऊं। तो ये जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, कोऑपरेशन, ये सब उसने तोड़ के रख दिया है। तो ये उसका दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट देखे न देखे, लेकिन सोशल एस्पेक्ट बहुत ही नेगेटिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर कंपैरिजन करें तो ये सब बताया गया है, पिल है, रिंग है, सब इंजेक्शन है, सब महिलाओं के लिए है। इन सभी का उपयोग करने के बावजूद भी देखा गया है कि
कंसेप्शन होता है। यहाँ पे भी आप देखिए लिस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव। तो मोस्ट इफेक्टिव IUCD बताए गए हैं, लेकिन मेरे पास आए थे 2 केसेस। 2 में तो जो है वो हाथ में पेशेंट जो है कॉपर्टी हाथ में लेके आई थी कि मैंने फैमिली प्लानिंग सेंटर पे लगवाया और देखो ये तो निकल गई, यही है ना आपकी कॉपर्टी? मैं बोली हाँ यही है। तो बोले अभी इसका क्या करने का? बोली कोई नहीं, अब मासिक आ जाने दो, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आपको लगवा देंगे। तो ये कॉपर्टी का। दूसरा जो है कॉपर्टी अगर ढंग से न रखी हो तो एब्डोमेन में भी चली जाती है, और कई बार हम लोगों ने एक्सरे निकलवाए और एब्डोमेन से मिली है, तो उसमें भी जो है वो कंसेप्शन का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो जिसको मोस्ट इफेक्टिव बोलते हैं उसमें ये गड़बड़ देखने को मिली है। तो बाकी जो लिस्ट इफेक्टिव है उसमें क्या होता होगा, और सभी आंकड़े जो है वो हम तक नहीं पहुंचते सब। और ये जो बातें हैं वो तो आधारभूत कहना बहुत तकलीफदेह होता है। पीपल डोंट ओपन अप सो इजीली। आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसा बताया गया है क्या? तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, काश्यप संहिता असमान गोत्रीय का सूत्र है, प्रविष्ट मात्रम बीजम ही रक्तेन परिवेष्टते। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसने बताया। तो जिस तरह ध्रुवम चतुर्णाम है तो ये भी है। तो इसका उपयोग करके हम लोग जो है वो बीज को रक्त द्वारा अवेष्टित न होने दे, इतना हम कर ले तो भी काफी है। योग रत्नाकर में काफी सारे योग दिए गए हैं। इसमें ये जो है पिप्पली वेदंग शुद्ध टंकण, उसमें हम लोग पलाश निर्यास जो है उसको ऐड करके हम लोग पिप्पलियादि वटी का उपयोग किए हैं। और उसमें जो है फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन सुबह में उसको 3 गोली लेनी है, हर रोज बढ़ाते जाना है, 30 तक पहुंचना है, 3 दिन बढ़ा के, तो 10 दिन में वो 30 तक पहुंच जाएगी। फिर 11वें दिन वो है वो 27 पे आएगी, ऐसे कम होते होते 20th डे वो 3 पे आ जाएगी और फिर वो बंद कर देगी। तो उसको मासिक जो है वो रेगुलेट भी होता है, ठीक से आता है। जिसको ज्यादा आ रहा है उसमें हम लोग संभाल के देते हैं, साथ में यष्टि मधु दे देते थे, तो उसकी वजह से उसको मासिक ठीक से प्रमाण से आता था। जिसको कम आ रहा है उसमें तो फायदा होता ही होता है, जिसको दर्द के साथ आता है उसमें भी फायदा होता है। और जब तक वो पिप्पलियादि वटी चालू रखेगी तब तक वो कंसीव नहीं होती है। जैसे ही उसने पिप्पलियादि वटी बंद करी, ये योग रत्नाकर का योग है ना पिप्पली विडंग शुद्ध टंकण, उसमें हम लोगों ने पलास निर्यास रखा था। तो जैसे उसने बंद करी दूसरे या तीसरे मंथ में ही वो कंसीव हो जाती है। और अगर हमने उसको पहले से सिखा रखा है कि भाई तुझे मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाइल्ड चाहिए तो इतना इतना संभाल लेना, वो संभाल लेती है और वैसे ही उसको बच्चा मिलता है। तो ये पिप्पलियादि वटी का हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट देखा है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है 3 से 30 तक गिनना है, 30 से 3 तक वापस आना है, ये उसको प्रॉब्लम देही होता है। तो महिला ये बोलती है कि आप ये जो एलोपैथिक की है वैसी छोटी वाली गोली दे दो ना, ये हमेशा उनका ये रहता था। जपा कुसुम चूर्ण और कांजी का तो प्रयोग मैंने नहीं किया, मैंने जपा कुसुम सीधा ही इस्तेमाल किया। और ऐसे केसेस में किए कि जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया और अभी उनको बच्चा चाहिए ही नहीं, तो मैं उनको बोलती थी कि जो हमारा देशी जपा कुसुम है इंडियन, तो उसका 3 लेने का फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स प्लक करने के, और 3 जो है उसको चबा के लेने के, उस ऊपर ठंडा पानी पीना। कांची कहाँ से बनाएगी, महिलाएं इतनी फ्री नहीं होती है, तो पानी के साथ ले लेती थी, सब उसका मासिक बंद हो जाता था, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता था। और वो बोलती थी हाश मैं बच गई, छूट गई इस सब से। तो ये मेरा अनुभव है। पुराण गुड़ जो है वो ऋतु काल के समय नित्य सेवन करना है 1 पल मात्रा में, लेकिन पुराण गुड़ मिलना तकलीफ देही है। तो अगर घर में किसी ने संभाल के रखा है तो हम दे सकते हैं, और ये भी इफेक्टिव बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सब जो है पीएच चेंज करने वाले। तंडुलियक मूल और तंडुलोदक जो है वो ऋतुकाल के 3 दिन तक लेना है। अब यहाँ पे ऋतुकाल से मासिक समय लेना है या मासिक के पश्चात का समय वो क्लियर नहीं है, तो हम लोग जो है मासिक के टाइम पे ही लेने को बोलते हैं। तालिस पत्र जो है, अकेला तालिस पत्र ज्यादा मात्रा में हम सेवन करते हैं तो उससे भी
वंध्यत्व आता है, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे तो कैरिक भी डाला हुआ है और शीतोदक के साथ लेना है तो बिल्कुल बिल्कुल उसका ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा। योनि पिचु और योनि धूपन जो है वो मैथुन के पूर्व करने को हम देंगे तो, लेकिन उसमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि पेशेंट जो है वो इतना धीरज वाला नहीं होता है। मैडम ने जैसे बताया कि अगर प्राणायाम करने वाले लोग हैं और अगर वे लोग अपने आप को संयमित रख सकते हैं और फिर ये चंदन तेल या सेंधव तेल या सिंपल तिल तेल, बात ये है कि विस्कस चीज होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी की वजह से जो है वो स्पर्म जो है स्पर्मेटोजोआ उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। और निम्ब का जो सूक्ष्म शाखा है यानी निम्ब का जो पूरा इसे कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ की जो शाखाएं हैं उसका जो अगर हम योनि धूपन करते हैं तो उसमें बहुत कड़वाई होती है और उस कटुता तिक्तता की वजह से जो है वो योनि के अंदर पीएच बदलेगी और स्पर्मिसिडल काम करेगा वो। और ये बात देखी गई है कि निम्ब पत्र, निम्ब मूल या निम्ब तेल तीनों का अगर ज्यादा मात्रा में जेनेटस में उपयोग होता है तो वो जो है स्पर्मेटोजोआ उसका क्रिया का ह्रास करते हैं। तो कटी प्रदेश में धारण तो हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि तोत्री मूल क्या है यही पहले तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन इन सभी का तो मुझे एक्सपीरियंस है और काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर महिला कम उम्र की है तो पिप्पल वटी के अलावा कोई और मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अगर चंदन तेल, सेंधव तेल, तिल तेल का या एरंड तेल उसका उपयोग कर सकती है महिला तो बहुत बढ़िया बात। ये कुछ वेब से मिले हैं जैसे ही भैया बता रहे थे, तो ये सब जो है उनका उपयोग होता है। क्रीमिग्ना जो कोई भी चीज है वो स्पर्मेसिडल होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे अखंड आनंद में एक ऐसा हुआ था कि क्रोमिग्नावटी उसका 2-2 गोली सुबह शाम दिया उन लोगों ने, लेकिन उससे कोई रिजल्ट मिला नहीं था। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत आभार मैडम आपका, बहुत बहुत गजब ही आप पर्सपेक्टिव रखते हैं हमेशा की तरह। एक्सीलेंट। अग्निहोत्री सर। नमस्कार, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। और मुझे लगा कि हम लोग बहुत गहराई तक अपने इस विषय को लेकर चिंतन पर पहुंच गए। अभी हम कुछ उस हिसाब से बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बहुत ही विशाल विषय इन्होंने छू दिया कि मेल क्यों नहीं ट्यूबेक्टमी कराएं, फीमेल्स ही क्यों जाती हैं। बड़ा सीधा सा हिसाब है, मेल कह देता है प्रेग्नेंट तो आप होती हो तो आप कराओ, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस तरीके से जो मेल डोमिनेंसी का जो चीज उन्होंने खुल के नहीं कही वो एक कारण बन जाता है। और दूसरे हम कैटेगराइज करेंगे बाद में कि आज के विषय में जो मैडम नीरू नेथानी ने भी रखी बात थी उसमें भी इंद्रिय संयम की बात रखी, तो वो कहाँ तक और कैसे अपनाई जा सकती है तो हम बाद में चर्चा करेंगे। मैडम पारुल जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके बहुत ही सहज और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए। नमस्कार। ओवर टू पॉइंट शर्मा। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। मैं अब डॉक्टर उषा डीटी को सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर उषा डीटी। वेलकम डॉक्टर उषा अगेन, वेलकम। Hari Om sir, thank you. हरि ओम। So on this a good day of contraception day, I'll really thankful to Pawan Sharma sir for giving him such a good opportunity. As sir called in the morning, I said, sir, I'm quite busy today because I have 2 more deliveries to conduct. But with the words of Pawan sir, I can't resist. I'll be always waiting for every case which is concerned with the Prasuti. So we'll move on to today's presentation. As we already know, the dignitaries who are already shared their views in last 3. Sir, my slides are visible? Yes, you can go for slideshow. Yes. So they are already given a very good glimpse on the contraceptions. So here, I would like to go with the concept of contraception, whichever it is told in Ayurveda, with its experimental study to prove on these contraceptive methods, and also which gives a beautiful blessing hopes for the budding doctors or the postgraduate studies to concentrate on this area of contraception for a better achievement.
So I think no need of introduction. I've already been doing it. So I'll No. You start your own. Our Ayurvedic experts are unique and exclusive. Don't worry. Okay. So You we see, know. no presentation is similar. Yeah, thank you. So our exploding birth rates, we know it has tremendously jeopardized economical and technological. But you can go for slideshow to maximize the size of slide. Yes, sir. It's a slideshow now, I think so. No PowerPoint. Yeah, I have gone with the slideshow now. So this is how the world population is moving from a developed regions to developing regions. But still, though we are in a developing area, there are many modern contraceptive effects which have evolved, and we have the reach of contraceptions in every tip of the fingers, but still the population is very small. So we know what's Only the first slide is visible. Sorry, sir. First slide is visible only. Slides are not moving. Now, is it okay? No. Only first slide is visible. Okay. 1 minute, sir. Stop share and again share. Yes, sir. Is it okay now? Excellent. Yes. So we know the contraception use of any artificial or natural means to prevent a conception or a pregnancy with the various devices or a different sexual practices, or with the use of chemicals or any modified drugs, even with the surgical procedures. So the contraception is not a present day view. It started evolution from a history. So when we go with an history, in Vedic period, in Atharvaveda or Brihadaranya Upanishad, it says there are a lot of prayers which have been practiced to prevent the pregnancy, and even some surgical methods were also been practiced. We do get references like crushing of a testes, vasectomy, and even the hysterectomies also, and certain medications to make both males and females go for sterility. So when we come to the period of history, there are very beautiful explanation of a contraceptions. They are used at a different vaginal gums, honey, and whereas in Chinese they used to have a mercuries to control the fertility, which are often result in a sterility and death. But the Africans used to have some gunpowders and the camel food. So these are the different references we do get in our historical period also. So that gives how important the practices of contraception plays. Even usually we practice a case of infertilities where we do have a references for astrology, though we have a time of fertility period, safe period, unsafe period, but there is something else which also plays an important role where we go with an astrology. They say certain planetary position at the time of coitus describes or determine where there's a conception or not. This can be either utilized for a fertility or for the contraception as per the need of practitioner. So let us come to the Ayurvedic classics. See, the contraceptions are avoided in many ways. It may be in the form of spacing in the children's or practicing social laws. Ayurveda gives a very important emphasis how a person should behave in the society, or what are the social laws should be followed by each and every person. And even as our madam, previously the presented madam has been pointed out, practicing yoga and pranayama, and also there are a lot of references which are available as a part of medicine to use in contraceptions. So why these contraceptions has been explained? See, we see Varameka Guniputru, Nachamur Kumshatan Vipi, Ekas Chandram Tamohanti, Nacha Taraganaha. So to brighten in the sky, one brightening Tara is enough, or one brightening star is enough, rather than having the whole galaxy. So that is why to brighten the life of one good child is more than enough to, rather than having a team of cricket players. So now I have given a different classification how we can practice or understand the contraception in a very different way. So contraception can be practiced either swabhavika or practice of yoga and mantra, or application of bahya avarodhas, or bahya prayukta aushadhis, externally usable contraceptive medications, or
Sthanika Prayukta Aushadhis, that is application of different medicines which acts as contraceptions, or Abhyantara Prayukta Aushadhi, oral medication or internal administration of drugs which acts as contraception. So when it comes to Swabhavika, we know observance of Brahmacharya. So the prohibition of marriage or non-conjugal life after entering into the Vanaprastha. So the different avasthas which are mentioned in the human being gives a very good explanation when to go for conception and when to go for Brahmacharya. And the social laws, as I previously explained, the whole life which is divided for Brahmacharya, Grihastha Ashrama, Vanaprastha and Sannyasa. Only the Grihastha Ashrama is the way we need to go for or a plan for conception. And delaying the marriage, advice for after completion of professional study. And it is most important in the present day, as they say, pregnancy should be planned. It should not be a mistake. Sexual abstinence, advice after getting in the wanted number of children. First 4 days of menstruation and during the flu, and 2 years of abstinence after the delivery had already explained in an Ayurveda in the concept of preventing unwanted pregnancies. So incomplete coitus, these are the methods. We do have a references in Ayurveda which helps in contraception, like coital interruptus or postures of coital life. There are different postures were explained to achieve the pregnancy, whereas if we practice some different coital postures, it can even prevent the pregnancies. And certain nadis, obviously we have Chandramukhi and nadis where there will be birth of me female child, and vice versa. There are other references. If the semen falls on the particular nadi, then it is infertile or it is not fruitful also. And we need to think about the Rutukshetra Ambubija to achieve the proper pregnancy. In the same way, these Rutukshetra Ambubija will also guide us to prevent the conception. And even the period of lactation, we know it's a physiological duration of contraception. So, as I said, yoga and the mantra, these are the virtues of which they could control their own psychological demands and avoid the conjugal relation. So, while controlling the mind, control the body, and it's how we can teach or we can lean about on our body to achieve the certainty. It may be the conception or contraception. And in Brihadaranyaka Upanishad, there are certain pranayamas which are told to practice the couple to prevent the orgasm. So this in Megovinoda, we do have a reference of shloka says, there is Om Garbha Stambhaya Swaha. I may not be very much professional in this shloka, but we do have this mantra to practice the contraception. So let us come for Bahya Avarodhas, like how we can prevent the conception. The individual at the time of sexual enjoyment should press firmly with the fingers of 4 part in the testicles, and which diverts the mind to the other things, thus prevents the ejaculation, thereby achieving the contraception. And whereas the Datura Mula, which is collected on the 14th day of Krishna Paksha, to be tied on the waist of the woman, and the right side bone of a black cat should be tied in the waist of a man, root of Shweta Shashapa to put their hairs in the coital line. See, all these different mechanisms, excuse me, told it's to divert a male towards the ejaculation or to prevent the orgasm, so that the deposition of semen should not happen in the female reproductive tract. So let us come to the Sthanika Aushadhis which are used. So the Yoni Purana, the different like application of Saindava Khanda, which is dipped in Tilataila, vagina before coital act, and application of Palashabeji Churna, and even the Yoni Purana with Datura Mula Churna has been explained. These are all considered as potent spermicidal effect, with where we can go with the modern correlation of anti-spermatic action. So in the Yoni Dharana, like Datura Mula, root of Indrayava and Parpati. So we know these Datura or Indrayava or Parpati are the potent spermatocidal actions. Yoni Pichu with the Nimba and Nimba Taila Pichu. Yoni Dupana with Nimba Kashta at the end of Ritsrava. So Abhyantara Aushadhis. So we do have a different drugs which are explained in the concept of contraception, where they can use like Haritaki. This Haritaki is considered as Shukra Shoshini, and Atasi it is Shukra Agni. Shukra Agni means which helps in as a spermicidal, anti-spermicidal activities. And Maricha, Trinadhala, Dhanyaka, and Kakasha, Kanaka, these are all Pumsaka Nashakam, which helps in the preventing the conception.
And here I would like to quote some experimental studies which have been already done, which shows an anti-fertility effects like Amalaki Churna, where the ingredients are Amalaki, Vibhitaki, Pippali, and Chitraka. It shows a potent anti-spermatogenic activity with anti-androgenic activity. So this helps or it acts as contraception. Shirisha, the methanolic pod extract signifies in decreasing the sperm density, whereas the Lashuna, if it is taken internally or in the local application as a Stanika Chikitsa, spermicidal effect can be well established. Papaya seeds, the chloroform extracts of Carcina papaya shows azoospermia after 90 days of treatment. And even the cotton seeds, the flavonoids, which shows its effect on spermatogenesis. So Aushadhis, which are mainly explained in the females, like Japakusuma with Aranala, there are a lot of experimental study and clinical studies which is done in the Japakusuma. And there's a wide good of references we do get in my textbook called as Concept of Contraception in an Ayurveda, which have been written by myself in last year. So there I have quoted all the studies which have been done by myself with Japakusuma with Aranala. It should be given to the Rutumati Stree, which shows an anti-implantation and estrogenic activity. So that is what the oral contraceptive pills are showing its activity in nowadays. And Pippali Chuna, and this is a well accepted Chuna. Even the CCRS have agreed these ingredients, where the Pippali Vidanga and Tankana is used as a potent contraception. Dhatri, Abhaya, and Rasanjanam. So this has possessed the anti-implantation activities. Talisapatra with Swarnagairika, if it is advised equal quantity at the time of menstruation, it acts as an anti-implantation. And Pippali Churnam, Pippali Nagakeshara Haridra. So these are the drugs, either we can use it for ovulation or we can use it for a contraception. It's based on the yukti of the person, when and how they are using. And the Maricha, the powder should be taken with Sharkarodaka during Rutikala, which helps in preventing the implantation. Lavana, Haridra Churna, Vidarigandha Churna, and seeds of Palasha. Puranaguda, Chitrakamula, all this acts on the which prevents 100% of ovulation, which results in anovulation and also the anti-implantation effects. And certain swarasas which are used, Palasha Pushpaswarasa, Yavala Mukta Kwata. And if this, we know now with the generation is a trend of emergency contraception. Yes, we do have a reference of emergency contraception in Ayurveda also. Use of Nasya or potent use of Swarasa or Yoni Dharana for drugs, which have been already explained, which certainly acts as emergency contraception. But the method of usage and the dose should be remained in sense to advise for a patient, and it needs an extreme research. I would like to encourage the postgraduate students to go with the research in the contraception so that we can come out with a well-established contraceptive practices through an Ayurveda. So in the conclusion, many references cannot be explained for a present day. Yes, it do needs a clinical research, but we can expect a good result. So contraception for an adult woman, choice of contraception is human right. Yes, judicial use of contraception can help in women in many ways. So I thank you for the organizers for giving this opportunity to convey my views of contraception in this platform. Thank you, sir. आप म्यूट हैं. Thank you, excellent. You have given excellent presentation, and means just you have seen that no presentation was similar. Our Ayurvedic experts have unique creative skills, no doubt. Conceptualization, visualization, creative skills. Salute to you all. Agnihotri sir. Our next webinar is on environmental health. So I think I welcome Mr. Amit Pal. Welcome, sir. I welcome Nitin Urmalia ji. So please, Agnihotri sir. I think our all guest speakers of today's this webinar is over. They have presented very well, and they highlighted all these things and possibilities regarding the contraception, touching all the sectors from
allopathic side, ayurvedic side, yogic side, self-control and all that. Very intelligently they put forward the subject matter available there. और इधर कलयुग में बहुत ज्यादा आवश्यकता भी हुई, विशेष रूप से आबादी के नियंत्रण के क्रम में कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। जब तक प्रोफेसर पवन शर्मा जी नया लिंक जोड़ रहे हैं, तो हमें अभीष्ट को लेके चलना हुआ कि कंट्रासेप्शन कब, कहाँ और कितने लोगों को कैसे जरूरत है, उसका स्वरूप क्या हो। तो एक तो ये है कि मैंने परम